Welcome back to We Educate. In today's lesson, we'll be looking at pressure groups and basically talking about politics, history, and everything in between. Now, this topic is important, firstly, because you may have heard about news talking about the Hindenburg reports and the Adani group, etc., etc. But we will obviously be looking at the conceptual part of things. We'll be looking at the sort of questions that have been and can be asked about pressure groups in general, and then try to arrive at an informed conclusion about the happenings around us. So let's first look at the questions that have come in the past. So, in the mains paper of 2017 in UPSC, they had asked a question: how do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years? Now, obviously, at the moment it's sounding either too general as a question or something that is highly technical, where you've got to differentiate between informal and formal pressure groups when we're still arriving at an idea of what pressure groups are. So as we proceed, hopefully you'll get a better idea, and in the lessons going forth we will be able to understand what the answer can be. The second question that has come is in 2021: pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the business associations contribute to public policies. Now, see, why this becomes important is, if you look at the questions, these are from the general studies papers, so it's not even that they will be restricted to people who have taken political science or sociology as their optionals. And as we go forth, interestingly, I would tell you that this was a topic that my father explored deeply in his PhD thesis, and the material that I'm sharing with you today is born out of that. So hopefully we can all gain from it. Now, by way of example, I don't know how many of you may have heard of the Bombay Plan. बॉम्बे प्लान हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ये एक्चुअली एक निकनेम था एक 15 साल पुराने इकोनॉमिक प्लान का, विच हैड बीन मेड फॉर इंडिया एंड हैड बीन प्रपोज बाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स वे बैक इन जनवरी 1944. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस. एंड इसमें जो बैकड्रॉप था वो थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द 1930s दैट बिगैन एम्फेसाइजिंग इकोनॉमिक इशूज़. ऑफ कोर्स आगे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इन सब का बहुत बड़ा हाथ था. और बॉम्बे प्लान के जो सिग्नेटरीज थे, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने सुना ही होगा, टाटा, बिरला, ऑल दीज पीपल, दे वर सिग्नेटरीज टू इट. इस बॉम्बे प्लान के पीछे रीज़न केवल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना नहीं था, केवल बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा देना नहीं था, बट इट वॉज टॉकिंग अबाउट a wholesome development of the economy. Having said that, our nation was at a crossroads because we had been rendered poor through the economic drain over the years. So that was one consideration where we had to sort of alleviate that concentration of wealth and make sure that there's equal distribution and equitable distribution, moreover, of income and resources. But at the same time, we had to be wary of the fact that grassroots industrial development in the country had suffered. We're all aware of the fact that for the longest time India में चीज़ें import हो रही थी from England and other places, लेकिन हमारी अगर आप iron, steel industry etc. grassroots industry की बात करें तो उन्हें develop होने में, उनमें capital लगने में obviously बहुत ज़्यादा समय लग रहा था because of all that backlog that colonization had left us with. So the Bombay Plan was important. बात यहाँ पे इसकी इसलिए की गई, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग एज वेल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस ग्रुप्स हैव एक्सरसाइज दैट सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस. एंड क्या इसका जो इंटरप्ले होता है इन चीज़ों का, हाउ दैट इम्पैक्ट्स पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिटिक्स इन द कंट्री. नाउ व्हाट इज़ अ प्रेशर ग्रुप? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. पहली और दूसरी डेफिनेशन आपके सामने है. पहला वाला कह रहा है दे आर नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स बट दे आर एंगेज्ड इन पॉलिटिक्स एंड देयर पॉलिटिक्स इज दैट ऑफ पॉलिसी. साउंड्स लाइक अ टंग ट्विस्टर, बट कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये नॉन पॉलिटिकल इन द सेंस कि दे आर नॉट फॉर्मली अफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी,
or their representatives are not usually affiliated to a party, but they are engaged actively in politics and its goings on. और पॉलिसी की क्योंकि बात हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक होगा तो फिर लेजिस्लेचर और पॉलिसी मेकिंग में वो चीज़ें अक्सर आपको ओवरफ्लो होती हुई दिखेंगी. यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आप यूएस में देखिए कि जैसे एक कहा जाता है देयर इज़ अ प्रो गन लॉबी, and in spite of so many instances of gun violence and problems with the free flow so-called of ammunition and guns in the US and so many killings, it has been very very difficult to bring about reform in those laws owing to one of these factors. The second definition is pressure group is the means by which strongly motivated minorities can overcome the will of the majority. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे अब आपको दिखेगा कि जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेशर ग्रुप, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आपने ये कहा कि हम मेजॉरिटी की विल को भी ओवरकम कर ले रहे हैं बीइंग अ स्ट्रांगली मोटिवेटेड माइनॉरिटी. तो ये ऑब्वियसली हो किस लिए रहा है, बिकॉज यू हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल. द थर्ड थिंग विच इज सेड टू बी अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रॉपर डेफिनेशन is by Francis Castles, और उन्होंने कहा था कि a pressure group is any group attempting to bring about political change through government activity or not, and is not a political part in the sense of being represented at that particular time in the legislative body. It constitutes a pressure group. And here political change refers to change of government and the form of government best suited to group interests. तो ये वेरियस चीज़ें हैं जो कि एक प्रेशर ग्रुप को डिफाइन करती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इनफैक्ट देयर इज़ नो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. नाउ व्हाट आर द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेशर ग्रुप? द फर्स्ट इज इंटरेस्ट ग्रुप, द सेकंड इज इन्फ्लुएंस ग्रुप एंड द थर्ड इज प्रेशर ग्रुप. इंटरेस्ट ग्रुप को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक लूजली बेस्ड ग्रुप होगा जिसमें कि ऐसे लोग होंगे जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, एक कॉमन उनका आइडियोलॉजी या गोल है, बट एट दिस स्टेज दे मे नॉट बी वेरी इन्फ्लुएंशियल. नाउ व्हेन दे स्टार्ट गेनिंग दैट सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस दे बिकम एन इन्फ्लुएंस ग्रुप. तो अभी भी ये थोड़ा लूजली बेस्ड है बट इनका कुछ कुछ इन्फ्लुएंस अब होने लगा है. सो दे आर नॉट just the ones who are voicing their demands but also the ones who are getting things done. Now moving on to pressure group, ये of course ये भी दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे आपने क्वेश्चन से भी डेसिफर किया होगा. और इस स्टेज पे आके अब काफ़ी से बढ़ जाता है as to how this particular pressure group will participate in the life of the nation, whether in politics or in policy making and so on and so forth. अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनकी ख़ास बात ये है कि दे अवॉइड द स्ट्रगल मेंटालिटी. सो व्हाट दिस मीन्स एसेंशियली इज़ दैट दे विल नॉट बी वेरी ईगर और यूजुअली सीन टू बी गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन और अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड सोसाइटल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. ये ज़्यादातर थोड़े पार्शियल या माइनर एडजस्टमेंट्स एक एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में देखेंगे. और इसीलिए जो इनकी टेक्निक्स होंगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, they will be negotiation, compromise and concession. और ये पढ़ के आपको एक आइडिया लगा होगा कि even during the pre-independence era the business pressure groups became so important because it wasn't just about violent struggle, it wasn't just about non-violent struggle. At the end of the day we had to get out of that struggle mentality and we had to arrive at concrete results, and those arose because of certain negotiations and concessions and compromises that were being done. And implicit in this operational scheme is the assumption of the good faith on behalf of the government, no matter how slim the evidence of this assumption is. तो जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नॉर्मली ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, बट इन ट्रूथ ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इन्हें हंटिंगटन ने कहा था ये फिल्टर्स की तरह होते हैं जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल लीडरशिप को अनलिमिटेड एक्सेस बाय नॉन एलिट्स और सोसाइटी के नॉन एलिट लीडर्स से प्रोटेक्ट करते हैं.
अब इनके खुद के क्या टेक्निक्स ऑफ एक्सेस होते हैं, तो कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें ये एम्प्लॉय करते हैं, कैसे ये बनते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप। तो पहला इन्होंने एग्जाम्पल दिया लॉबिंग का, विच आई ऑलरेडी स्पोक टू यू अबाउट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम यूएस पॉलिटिक्स। और लॉबिंग का मतलब होता है इट्स अ पॉलिटिकल टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट बाय कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, एम्फेसाइजिंग इशूज विच रिप्रेजेंट द ग्रुप इंटरेस्ट, and finally elaborating the econopolitical implications of proposed policy measures on the pressure group। तो ये लॉबी करेंगे, बताएंगे कि क्यों, मान लीजिए अगर लेट्स अज्यूम दिस इज फिक्शनल बट लेट्स अज्यूम दैट समवन इज थिंकिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी and there's a pressure group, business pressure group, who tells the government that look, you're going to do this, but then what happens to our interests, how do we benefit out of it and for how long। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर फाइनेंसिंग, ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, फाइनेंसिंग ऑफ पार्टी और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस। और इसी के चलते आपने सुना भी होगा जब बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और इस बात पे एम्फेसिस दिया गया था कि इससे कहीं कुछ हद तक करप्शन भी कर्ब होगा और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आएगा इन फंडिंग। वेदर दैट्स डन और नॉट इज़ अनदर क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड एविडेंस टू गवर्नमेंट कमिटीज़, ये भी ये करते हैं। अब ये तो देखिए बात ये हो गई कि अगर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स उस तरह के हैं तो हाँ, इफ दे possess expertise in the domain of their activity in the productive sector, they will frame draft bills and submit them to the legislators। तो let's say कि we are thinking of coming up with 6G, so of course we need help and the knowledge of technocrats who are dealing in that sector, in the telecommunication sector and so on and so forth। तो वहाँ के जो business pressure groups होंगे उनका भी इसमें रोल आएगा। और एक थोड़ा लेस पैलेटेबल है प्रोपोगंडा, बट इट इज़ द सैड ट्रूथ कि येस, अ लॉट ऑफ बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स create a favorable climate for their particular cause by appealing to public opinion through speeches, books, pamphlets, special articles and news releases। तो क्योंकि देखिए पब्लिक ओपिनियन का फॉर्मेशन भी ज़रूरी होता है। वन कैनॉट बी सीन टू जस्ट बी डूइंग थिंग्स फॉर द जनरल गुड। It's important to make people believe that you're doing things for the general good, and that is the theory by which these groups go forth। और वो कोशिश करते हैं कि ये इम्प्रेशन ना जाए कि हम अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और इसलिए ये भी एक ज़रूरी मैकेनिज़्म इनके लिए हो जाता है। और सबसे ख़राब फॉर्म जब ये लेता है तो ये होता है दे मे रिजॉर्ट टू आउटराइट ब्राइबरी इन एन अटेम्प्ट टू गेन नॉलेज ऑफ ऑफिशियल पॉलिसीज बिफोर हैंड। एट दिस जंक्चर इफ आई मे मेंशन टू यू, there are several series which are based on espionage, and Rocket Boys being one of them। You would if you see it you will find out कि किस तरह there are so many things at play। A simple space program or a nuclear energy development program being closely watched by so many countries and so many people from so many countries, उसके क्या reasons हो सकते हैं और किस तरह inside information निकालने की कोशिश की जाती है। फिर हम आ जाते हैं इनर ग्रुप पे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक फाइनल यहाँ पे हम पॉइंट डील कर रहे हैं, विच टॉक्स अबाउट द इनर ग्रुप बीइंग अ रिपोजिटरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास कॉन्शियसनेस। यहाँ पे इसका मतलब सिंपली ये है कि जो इनर ग्रुप होता है, कोई भी, जैसे आप कोई भी बड़ा ग्रुप ले लें, उसमें कोर ग्रुप होता है, उसी तरह जो इनर ग्रुप होता है इसमें वो फ्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्ट एज लीडर्स एंड कंपोज द न्यूक्लियस। एंड जो मेजर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं बिजनेस प्रेशर ग्रुप में, बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट, तो ये जो इनर ग्रुप होता है ये इंटीग्रेट करता है वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद इन द प्रेशर ग्रुप। और इसमें जो लोग होते हैं दे are likely to be particularly sensitive to the general needs of private enterprise that transcends narrow interest concerns। और ये क्लास अवेयरनेस को सस्टेन करते हैं, अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी विद एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ क्लास इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये जो इनर ग्रुप होता है ये डिटर्मिन करता है कि फाइनल जो रोल निभाएगा बिजनेस प्रेशर ग्रुप वो किस तरह का निभाएगा और किसके फेवर में जाएगा। और इनके बीच ऑब्वियसली वेल्थ जो होती है वो सॉलिडारिटी क्रिएट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती है।
तो ये तो आप सभी ने देखा होगा विद मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड पैसा पैसे को पहचानता है वाला सिचुएशन आ जाता है. तो वही यहाँ पे भी होता है. और जो पेरिफेरल मेंबर्स ऑफ सोशल ऑफ प्रेशर ग्रुप होते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं अक्सर, वेयर एज द इनर ग्रुप ऑलवेज लुक्स फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स. नाउ फॉर द नेक्स्ट क्लास विल बी लुकिंग एट इंडियन बिजनेस क्लास एज अ प्रेशर ग्रुप. और इसका एक तरह से हम आपको अगर एक छोटा सा प्रिल्यूड देना चाहें, सो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू व्हाट G.D. Birla said way back in 1923, and he spoke about an urgent need for an all India organization of Indian business interests, and here's what he said. I have been watching very closely the activities of the Associated Chamber for the past few years, and I feel that their strong organization will be detrimental to Indian interests if steps are not taken immediately to organize a similar institution of the Indians. If Bombay takes the lead now, I hope you will be able to build up a very strong organization in a very short time. If not checked early, the influence of the associated chambers may increase pressure on the government beyond its resisting power. If you take up the lead, you will have wholehearted support from Calcutta, and it would be great glory to see the various merchants from all parts of India standing on one platform and putting well considered and combined views which will carry greater weight. और इंटरेस्टिंगली जो स्वराज पार्टी थी उनको इंडियन बिजनेस से काफ़ी फंडिंग उस टाइम पे मिली, और ये एक प्रो बिजनेस पार्टी आप कह सकते हैं उस ज़माने में हुआ करती थी. So this is it for today, and we hope this was helpful. Of course, it must be seeming a bit abstract at this stage, but as we go along and we explore this topic in greater depth, you will be in a better position to understand and answer the questions. Keep studying and stay healthy.